वेलकम बैक टू आदित्य फाइनेंशियल इनसाइट। तो NISM सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन कोर्स में आपका स्वागत है गाइस। तो हम इसमें चैप्टर नंबर 5 इक्विटी ऑप्शन एंड फ्यूचर स्ट्रेटजी के बारे में इसमें कर रहे हैं, जो कि अभी 2 लेक्चर हो चुका है। अब ये 3rd लेक्चर रहेगा जिसमें कि हम कॉलर से शुरुआत करेंगे। ठीक है गाइस, तो देखते हैं। तो कॉलर से हम आज शुरुआत करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक कॉलर स्ट्रेटजी एन एक्सटेंशन ऑफ द कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी। कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी में आपको प्रोटेक्शन मिलता है, न ज़्यादा लॉस होगी न ज़्यादा गेन होगा। नाम है कॉलर कवर्ड। रीडर्स में रिकॉल दैट इन द केस ऑफ कवर्ड कॉल downside risk remain for the falling price. If the stock price move down, lose keep increase. Covered call is similar to the short put. To put a floor to this downside, we go long put option, which essentially eliminates the downside of the short underlying future or systematic short put. In our example के through हम देखेंगे, देख सकते हैं। We had assumed that a trader goes long a stock 1590 and short a call option with a strike price 1600. They receive 10 रुपया as a premium। देख सकते हैं। In this case, BEP was 1580. If the stock price fell below 1580, the loss could be unlimited, whereas if price rose above 1600, the profit was capped 20. To limit downside, let's say we now buy an out of money put option of the strike 1580 by paying a small premium 7 rupees. Now if price underlying fall 1490 on maturity, longer stop is equal to, you can see here the guy, 1590 plus 1490 equal to minus 100। शॉर्ट कॉल यानी 10 रुपये हुआ। तो लॉन्ग पुट में आप देख सकते हैं, पहले लॉन्ग स्टॉक्स है। लॉन्ग पुट में -7 माइनस 1490 प्लस 1580 इक्वल टू 83 एंड नेट पोजीशन बनता है -100 प्लस 10 प्लस 83 यानी 7। इन केस कवर्ड कॉल की दिस वुड बी 90 minus the price rise to 1690 on maturity, long stocks minus 1590 plus 1690 is equal to 100. Short call is equal to 10 minus 1690 plus 1600 is equal to minus 18. Long put is equal to minus 7. Net position 100 minus 80 minus 7 is equal to 30. In case of covered call, this would have been plus 20. Combined position, long underlying, short call and long put as follow. Long stocks 1519 and long put 1518. Short call 1600, premium 7 and call premium 10. CMP देख सकते हैं आप, तो ये चेंजिंग प्राइस होता है। तो आप देख सकते हैं 1490 का लॉन्ग स्टॉक -100 है, शॉर्ट कॉल 10 रुपये है, लॉन्ग पुट 83 है, नेट आपका -7 हो गया। वहीं 1500 का आपका लॉन्ग स्टॉक -90, शॉर्ट सेम ही रहेगा, लॉन्ग पुट 73, इसमें नेट -7 का। तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं देख सकते हैं लॉन्ग स्टॉक कमता जाता है और शॉर्ट कॉल आपका सेम ही रहेगा, लॉन्ग पुट आपका कमता जाता है, तो नेट हमेशा कांस्टेंट होता है। तो देख सकते हैं गाइस, इसी तरह जैसे जैसे हम ऊपर हो जाएंगे आपका लॉन्ग स्टॉक बढ़ता जाएगा और ये इसमें आपका फिर ये नेगेटिव की ओर पहुँचता है। फिर उसको आप देख सकते हैं कि इधर पॉजिटिव आपका 13 कांस्टेंट हो जाएगा, जिससे कि आप देख सकते हैं ये कॉलर पे ऑफ चार्ट है। तो देख सकते हैं ये हो गया हमारा लॉन्ग स्टॉक जो कि इस कलर में है। वहीं नेट में आप देख सकते हैं, नेट आपका ब्लू लाइन में, तो देख सकते हैं इधर भी है, फिर इधर से ऐसे गया, ठीक। वहीं शॉर्ट कॉल का देख सकते हैं, शॉर्ट में कांस्टेंट से फिर डायरेक्ट नीचे नेगेटिव हो गया। वहीं लॉन्ग पुट में आप देख सकते हैं, लॉन्ग पुट में
पहले ऊपर से कम था फिर इसके बाद कांस्टेंट हो जाता। ठीक, तो ये हम देख लिए। It is important to note that while the long put helps in reducing the downside risk, it also reduces maximum profit, which a covered call would have generated. Also, the VEP has moved higher the amount of premium paid for the buying out of the money put position. बटरफ्लाई स्प्रेड हम देखेंगे गाइस। तो बटरफ्लाई स्प्रेड में क्या होता है, एक कॉलर is an extension of the covered call. Butterfly spread is an extension of the short straddle. We may recollect the short straddle has an unlimited downside if the underlying moving significantly in the either direction to limit the downside, and the trader buy one out of the money call and one out of the money put along with the short straddle. This result is position with the pictorial playoff which looks like a butterfly, and so this strategy is called butterfly spread. A butterfly spread can be created with only call, only put, or combination of both calls and put. Here we are creating this position with the help of only call. To do so, the trader must take the following position in the three options with a different strike and the same maturity date. Long call 1 is equal to with the strike 66,000 and premium pay 230, and short call 2 the strike 6,100, premium received by 150, long 3 a strike 6,200 and premium paid 100, short call 2 a strike 6,100 and premium received 150. Let us see what happens if on expiry a stock price less than and equal to 6,000, equal to 6,100 and more than equal to 6,200. Case 1 price at a 6,000, तो केस 1 में आप देख सकते हैं लॉन्ग कॉल 1 का -230 है, वहीं शॉर्ट कॉल का 150 है गाइस, लॉन्ग कॉल 3 का 100 माइनस है, वहीं शॉर्ट कॉल 2 का 150 है। तो नेट पोजीशन में देख सकते हैं आप गाइस -30 का, तो इसमें इसलिए 2 कॉल और 2 शॉर्ट का है। वही फिर हम देख लेते हैं फॉर एनी प्राइस लोअर देन 6,000 ऑल कॉल बी out of the money, so nobody will exercise, hence buyer will lose premium and seller rights will get to keep the premium. In all this situation the trader lose would be a flat 30, call case 2 price 6100, long 1 देख सकते हैं 230 minus 6,000 plus 6,100 equal to 130, and short call 2 150 and long call 3 minus 100 and short call 2 150. तो नेट पोजीशन हम देखेंगे इसमें 17 का, तो दिस इज a maximum possible profit for this position. Both the short call earn and premium for the trader. This entire premium is retained by the trader for all price less than or equal to 6. Premium is retained the trader for all price less than equal to 6,100. अब आ जाते हैं केस थर्ड में गाइस, तो केस थर्ड में हम देखते हैं कि 6,200 या हाइयर। ठीक, लॉन्ग कॉल 230 माइनस 6,000 प्लस 6,200, शॉर्ट कॉल 2 का 150 माइनस 6,002 plus 6,100 equal to 50. This will start getting losses as price increase. लॉन्ग कॉल 3 का देख सकते हैं -100 है, शॉर्ट कॉल 2 का 150 minus 6,200 plus 6,100 is equal to 50. This will start getting loss as a price increase. Net position -30 plus 50 minus 100 plus 50 is equal to -30. From 6,200 or higher, the long call will start make money for the trader, whereas the short call will be in the losses. The net payoff all four options would always be equal to -30. Following table and picture explain this position. देख सकते हैं गाइस ऑप्शन लॉन्ग शॉर्ट, कॉल लॉन्ग हो गया,
कॉल शॉर्ट हो गया, कॉल लॉन्ग हो गया, कॉल शॉर्ट हो गया। देख सकते हैं 6000, 6100, 6200 एंड 6100। दो कॉल स्ट्राइक प्रीमियम देख सकते हैं 230। लॉन्ग का है, कॉल का, शॉर्ट का 150 है, फिर लॉन्ग का 100 है, शॉर्ट 150 है। स्पॉट प्राइस 6100। ठीक, 6100 पर आपका देख सकते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे रहते हैं तो लॉन्ग कॉल कांस्टेंट सेम ही चलता है। तो नेट फ्लो देख सकते हैं आपका टोटल 30 है। जैसे जैसे हम ऊपर पॉजिटिव की ओर जाते हैं, यानी 6300 पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर 6100 स्पॉट है, तो वहाँ पर 70 का पॉजिटिव होता है। जब उसको ऊपर जाते हैं तो उसके ऊपर भी आपको कांस्टेंट निगेटिव ही है। तो इसमें देख सकते हैं सिर्फ आपको 6300 पर ही आपका 70 रुपये का पॉजिटिव बन रहा है। ठीक, तो ये है बटरफ्लाई से। ठीक है, जिसमें कि सिर्फ आपको बीच में एक पॉजिटिव होना, बाकी दोनों में आपको निगेटिव ही निगेटिव देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं जो येलो लॉन्ग कॉल 1 का है, जो ऊपर से निगेटिव की ओर आ रहा है, फिर कांस्टेंट हो जाता है। फिर शॉर्ट कॉल 2 का देख सकते हैं, ये पिंक वाला, जो कि आप कांस्टेंट से फिर नीचे आते निगेटिव हो जाता। फिर लॉन्ग कॉल 3 का नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जो कि कांस्टेंट से फिर ऊपर पॉजिटिव चला जाता है। तो ये और कॉम्बिनेशन 2 कॉल और 2 शॉर्ट का बटरफ्लाई स्प्रेड ये बहुत कठिन है, ये ज़्यादा जनरल लाइफ में यूज नहीं हो पाते हैं। कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग बटरफ्लाई स्प्रेड -230 प्लस 100 -100 प्लस 150 -30 है। lower BEP 6000 plus 30 600 6030 and higher BEP 6200 minus 330 6170. This position can be also created with help of only puts or combination of call put. To create this position from put, you need to buy one highest strike option, sell two middle strike option, and then again buy one slowest strike option. And to create this position from the combination of calls and put, you must buy one call at the lowest strike and sell one call at the middle strike. Buy one put at the highest strike and sell one put at the middle strike. This is a limited profit and limited loss strategy. Hedging with option. Options are known for providing an insurance against the unexpected movement in the underlying price. If an investor has plans to buy a stocks at the some data in the future, buying a call option on the stock enable him to lock in the purchase price for the stocks today. Thus, the investor is protected against the surprise rally in the stock price. Hence, the buying is a call option enable and call holder to ensure against large and surprise upside movement in the stock price. For example, suppose that an investor is expected to receive some money from a maturing fixed deposit at the end of the month and plans to buy 1500 shares of a company at that time. The risk faced by the investor is the stock price might rise a lot by end of month, making it difficult for him to buy the planned number of shares. This the investor can protect himself from the risk of a rally in the stock price buying a call option on the stock today. Suppose that the stock price today 430.63 and the investor buy a near month call option with a strike price 460 at a premium 90. Now suppose that the stock price on the expiry date has risen 520. In this case, the rise in the call premium would compensate the investor for the rise in the stock price. However, if the stock price falls 430 on the expiry date, the investor would buy the stock at the market price
which is cheaper than exercising the option in the way. Buying a call option protect the investor from a sudden rise in the price of the stock that he is planning to buy in the future. Similarly, buying a put option enables an investor to protect his portfolio against unexpected down unexpected downward movement in the underlying price. प्रोटेक्टिव पुट में देख सकते हैं प्रोटेक्टिव पुट में गाइस दिस इज ए हेज पोजीशन एंड investor long in the cash market always run the risk of fall in price and thereby the reduction of portfolio value and MTM loss. Market timing. A mutual fund manager who is anticipating a fall can either sell his entire portfolio or he can short future hedge in portfolio. In both cases, he is out of market as, as far as profit from upside and concern. What can be done to remain in the market? Reduce losses but gain from the upside by insurance. By buying put option, the funds manager is effectively taking bearish view on the market, and if his view turn to the correct, he will make profit on the long put, which will be useful to whip out MTM loss in the cash market portfolio. Let us say an investor buy a stocks in the cash market 1600 rupee and at the same time buy a put option strike price 1600, pay minimum premium 20 rupiah. Now if the price fall 1530, here are the long cash 70 and long put 50 प्रॉफिट हो गया तो देख सकते हैं कि -20 -1530 प्लस 1600 यानी 50 नेट पोजीशन आपका -20 का बनना है ठीक. For all fall in the market, long put will be profitable and long stop position will be loss making, thereby reducing the overall loss only the extent of premium paid. If a strike are different, losses will be different from the premium paid. In case price rise to 660, long cash profit 60, the 1660 minus 1660, और long put loss 20, तो नेट पोजीशन आपका 40 का पॉजिटिव रहेगा देख सकते हैं. As the stock price keep rising, profit of the hedging position will keep rising. This is the because with maximum loss in the long put in equal to premium paid and the profit, the long stock position keep increasing. The combination of position would like this: long cash 1600 and the strike price 1600 premium 20 का. तो देख सकते हैं गाइस जैसे जैसे कि हम नीचे हैं तो आपका लॉन्ग कैश का प्रीमियम नीचे निगेटिव बढ़ता जाता है जैसे जो ऊपर आते हैं ऊपर आता है लॉन्ग पुट का आप देख सकते हैं लॉन्ग पुट का ऊपर आते हैं तो कमता जाता है नीचे जाते हैं तो पुट है तो अगर मार्केट गिरेगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी नेट तो कांस्टेंट ही है. जब 1600 के ऊपर आती है मार्केट तो देख सकते हैं पॉजिटिव वो बढ़ रहा है. फिर नॉर्मल अब हो गया होगा इतना टेक्चर देखते देखते प्रोटेक्टिव पहले ये है प्रयोग चार्ट तो देख सकते हैं a protective payoff similar to the long call. This is because protective put position offer the scope of unlimited gain with limited loss, which is also the payoff profile of a long call position. Hence, the protective put is called synthetic long call position. Arbitrage using option. Arbitrage using put call parity. We have seen how it is possible to use arbitrage strategy whenever the trade price of the future contract deviates from its fair to theoretical price. In the same manner, arbitrage is possible whenever the trade price of the option deviates from the fair price. Such arbitrage is based on the important principle known as a put-call parity. It is simple. State the relationship between the calls and put with the same strike price and time to maturity. It can be started below C plus X.
into E minus RT is equal to P plus S naught. In this formula, C and P denote the premium for the call and put option. X is the strike price of the option, so S naught is the spot price of the underlying. R is the ratio of interest and T is the time of expiry option. What is the formula means that if we know the price of the underlying stock or asset and also price of call option on this asset, we can derive fair and theoretical price of the put option on the same underlying asset having same strike price and expiry date. Call option. Further, if the trade price of the put option is different from the derived fair price, there is an arbitrage opportunity to make risk-free profit. Note that the put call parity principle is only applicable to European option. For example, suppose that the stock is trading 1251 and call option with a strike price 1240 and expiring after 1 month is quoting 47.50, assuming that the interest rate 8% per annum. What should be fair price of 1 month put option on a stock with the same strike price? Substituting number in the put call parity formula, we can derive the fair price of the put option 28.26. Now suppose that the put is being traded in the market at 23.15. It means that the put is underpriced, thus creating an arbitrage opportunity. What will the arbitrager do? The arbitrager will buy the put and stock paying 23.15 and 1251 and the simultaneously short and call option for the 47.50. This leaves him behind net cash outflow 1226.65. 1251 plus 1223.15 minus 47.5. Assume that the arbitrager can borrow this amount at 8% per annum. Now suppose that the stock rise to 1275 on the expiry date. The arbitrager will sell the shares held by him 1275. The put bought by him will expire worthless. The short call position will be in the money and lead to the loss 35 for the arbitrator. The borrowing will grow 1234.86, 1226.65 exponential 0.08 into 1 power by the 12 and will have to be repaid. The net cash inflow will thus 1275 minus 35 minus 1234.86 is equal to 5.14, which is equal to the difference between their fair price and trade price of the put. If the stock fall to 1200 on the expiry date, the short call will expire worthless. The arbitrator will sell his stock at 1200, but the long put will result in the payoff 40 and after repayment borrowing 1234.86. The arbitrator will again be left with net gain 5.14. The above examples show how the principle of put call parity can be used to find arbitrage opportunity between call and put options on the same underlying stocks and having same strike price expiry dates. However, these strategies are difficult to execute because they involve in simultaneously buying and selling of the stock, the put and call. Any delay in executing one leg of a strategy will lead to arbitrager not being able to capture the anticipated arbitrage gain. Also, if the arbitrager is unable to execute one leg of the transaction after the other leg has already been executed, he will be left with a net long or short position, which can expose him to large losses. Delta hedging. We have discussed briefly about the Greek in Unit 4.
ठीक है गाइस, तो remember that the delta of the option measure the sensitivity of the option value given a small change in the price. The underlying asset hence if the delta call option 0.06, it means the changes of the 1 rupee underlying stock price due to change in 0.60 the price of option bill. Option trader use the concept delta to hedge portfolio of option position. This will clear from the following example. Suppose that the stock trading 100 rupees and trader takes short position 10 rupees at the money call option on this stock, assuming that the option have loss at 50 rupees. Now suppose that the delta of the call option 0.50, it means that 1 rupee change stock price will be call price change 50 paisa. Since the trader sold the call, he is at risk from rise stock price. If the hedge is risk, the trader must go long in underlying stocks. But what should be the size of the longer stock position? This is decided based on the position option delta. If the stock price move up 1 rupee, then the loss of one trader also short call position 0.50 into 50 into 10 देख सकते हैं 250 lakh. The trader long position in a stock future should compensate for the loss in the option position. Remember that the stock price future contract has delta roughly 1 because future price go hand in hand with the spot price. At the loss side 50, it means trader must go long 5 future contract since the delta is future contract equal to the 1 and the long position is 5 lot future a delta 1 into 5 into 50 250. The delta of the 10 lots short call minus 0.5 into 10 into 50 minus 250. Hence the delta of the combined position short call and long future is equal to 0. This position is called delta neutral position. What this means is the combined position of the short 10 lots of call and long 5 lots of future contract is not affected by any small change in the stock price. The keyword here is the small change. The option delta changes with any change in the price of underlying stocks. So if the stock price rise from 100 to 110, the call delta may rise from 0.50 to 0.60. In that case, the trader will need to increase his long position in future so as keep portfolio delta neutral. He will now have to go long in one more lot of future so that the long future position is now 6 lot. This will again make the combined position delta neutral. In this way, a trader must keep buying or selling a future contract in order to maintaining the delta of the combined position near zero. This process is known as delta hedging. It is the option trader way of managing the risk of his short option position. Interesting interpreting option interest and put call ratio trading strategy. Before we end this chapter, let us understand some basic terms associated with the future and option, how to decide a trading strategy. Open interest, this refers to the number of positions that have been opened by the market participants not yet closed. For example, if market index future contract and open interest 2,56,000 contract, it means the market participate has bought or sold 2,56,000 contract till date. तो देख सकते हैं न्यू फॉर्मूला ऑफ ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं गाइस कैसे. The open interest now the major portfolio level by the computing the new delta adjustment option position. लॉन्ग फ्यूचर का +1 है और शॉर्ट का -1 है. अगर 1 रुपया गेन होता है तो एवरी वन पे अंडरलाइन एसेट एंड लॉस 1 रुपया एवरी राइट अंडरलाइन है. तो देख सकते हैं लॉन्ग कॉल पर 0 से +1 एंड शॉर्ट पर 0 से -1. तो लॉन्ग पुट देख सकते हैं
A new formula of opportunity to advise SEBI aim to enhance the both risk management and trading कन्वेंशन इक्विटी डेरिवेटिव। तो इस पर हमेशा चेंज होते रहता है गाइस, तो देख सकते हैं। ये स्क्रिप्ट 1 है, लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर क्लाइंट 1 300 एंड इसका देख सकते हैं 300, क्लाइंट 2 का लॉन्ग पोजीशन 500 है, जिसका डेल्टा 0.5 देख सकते हैं, प्रॉफिट 25 250 एंड क्लाइंट 3 का देख सकते हैं 0.5 एंड डेल्टा 0.5, तो 15 और 15 60 और 60 देख सकते हैं। ये फॉर्मूला है टोटल ऑफ नोटेशनल ओपन इंटरेस्ट है फ्यूचर इक्वेशन 900 is mentioned in the table we used to calculate open interest inclined to 500 earlier, but it is future equation equity open interest now the multiply delta 0.5 with long position in call 500। सिमिलरली इसी तरह आपको ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाता है। ये फिर पुट कॉल रेशियो का है इसी तरह। टोटल ट्रेड क्वांटिटी ट्रेड वैल्यू 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट साइज है, सेम टू सेम ही इसे भी देख सकते हैं। पीसीआर 8000 बाई 12000 0.67 है, पीसीआर हो गया। पुट कॉल रेशियो टोटल कितना कॉन्ट्रैक्ट है कॉल का, कितना पुट का, तो देख सकते हैं। पुट कॉल रेशियो पुट को ऊपर रखा गया है, आपकी कॉल अब दोनों कॉम्बिनेशन के 3.67 है। ठीक है, तो इस तरह से फिर आ जाते हैं कुछ सिंपल क्वेश्चन है। ये चैप्टर इन होने वाला है। टिप इन्वेस्टर बाई कॉल ऑप्शन विद द लोअर स्ट्राइक प्राइस एंड सेल अनदर कॉल ऑप्शन विद द हायर स्ट्राइक प्राइस बोथ सेम अंडरलाइंग शेयर एग्जांपल सेम एक्सपायरेशन डेट। तो बुलिश स्प्रेड है गाइस। which of the following hedge position प्रोटेक्टिव पुट हेज हमेशा प्रोटेक्टिव पुट में होता है। एंड पुट कॉल पैरिटी refers to the relationship between the call and put option same stock with the same strike price same maturity। which of the following situation indicate the bullish trend underlying a rising future price along with the rising open interest। जैसे से ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है उससे उसके फ्यूचर प्राइस भी राइजिंग होता है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा चैप्टर एंड हुआ गाइस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से चैप्टर नंबर 6 शुरुआत करेंगे। तो थैंक यू गाइस।